अब एग्जाम की रणनीति बनाइए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। जी हाँ, इस 14 और 15 अप्रैल को टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर प्रीमियर लीग ऑन एसएससी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, टीचिंग, स्टेट पीएससी एंड यूपीएससी। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनरोल कीजिए टेक्स्ट बुक के साथ। तो अब होगा शोर ऑन, गेम ऑन एंड प्रिपरेशन फुल ऑन। Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we are going to discuss the concept of database design. So, basically, we'll restrict our discussion to the concept of keys, how to find out the candidate keys, super keys, and then followed by the concept of the referential integrity constraint. Then we'll understand what is attribute closure, what are the applications of attribute closure, what sort of questions can be asked. Then one major important topic we are going to cover is decomposition of a relation, lossy or lossless, and dependency preserving. तो ये सारी चीजें जो भी आज वाले सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीजें बेस बनेंगी हमारे लिए नॉर्मलाइजेशन में। तो हमें ये मालूम है डेटाबेस डिजाइन, और एक और सेशन लूंगी मैं 1 आवर का अप्रोक्सीमेटली, इन विच विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा डीबीएमएस का। Okay, so before starting with the session, quickly give me the confirmation if the audio and the video is fine, so that we can quick start with our discussion. Very good evening, Shubham. Good evening, YouTuber. Very good evening, Durga Prasad. I hope audio video बिल्कुल clear है. Thank you so much, Shubham Saxena. चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं की, तो इट विल बी मोर लाइक द डिस्कशन। ओके, लेक्चर वाली कोई चीज नहीं है इसमें। तो जो भी आपको पता है जस्ट टेल मी व्हाट यू नो, एंड बाकी जो भी चीजें होंगी आई एड ऑन टू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय की? क्योंकि जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं, की इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सिग्निफिकेंट रोल, बिकॉज जब हमें यूनिकनेस चाहिए, और समटाइम्स वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ कि हम डेटाबेस में सेम डेटा बार बार एंटर ना करें, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हमें कीज चाहिए, करेक्ट? सो वी कैन से दैट keys are nothing but it is representing, जब डिफॉल्ट टर्म आपको की गिवन है, अगर सिर्फ की गिवन है तो बाय डिफॉल्ट दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट की। सो की इज नथिंग बट it determines the minimum number of attributes, minimum number of attributes used to differentiate between all the tuples of the relation. Now can you tell me that what is a tuple? इस टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं। All the tuples of the relation. Relation means we are talking about the table, or relation means where we are storing the data in the form of rows and columns. तो यहाँ पे हम 2 dimensional array use करते हैं। 2 dimensional array, तो table name, for example we have the table name student. This is student is the relation in which we have few attributes, कॉलम नेम, और यू कैन से दैट स्टूडेंट एक आपके पास ऑब्जेक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है? स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर को मैं स्टूडेंट आईडी बोल रही हूँ, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट, and for example course of the student. Okay, let's assume these are the 5 attributes which are required in the student relation. So student relation में we are storing the information related to a student. Here student ID, student name, student age, date of birth and course, ये जो fields हैं, these are representing, these are known as, these columns are known as the attributes, columns, or these are known as the attributes.
Okay, relation name along with the attributes is known as the structure of this relation. But जब हम इसमें कोई data insert कर देते हैं at any point of time, relation along with the data, that is known as instance of a relation. For example, student ID 1, student name is, for example, John, age is 24, date of birth is, let's assume today is 15th 4 and 9, courses C. Similarly, student 2, this two students can have the same name, right? दो students का same name हो सकता है, age भी same हो सकती है, date of birth भी same हो सकती है. But here student ID is different. Is this possible? Yes. क्योंकि जब भी हम यूनिवर्सिटी की या स्टूडेंट डेटाबेस की बात करते हैं, no two students can have the same name. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंडिविजुअल पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, वी कैन आइडेंटिफाई इट विद आधार नंबर. नो टू पीपल कैन हैव द सेम आधार नंबर, right? So there is some identity used to uniquely identify all the tuples of a relation. अगर student ID को छोड़ देते तो complete data is same values को हम repeat करें, that is resulting into the redundancy. तो इसलिए हर रिलेशन में हम कुछ की प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट कैन रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू एंटर द सेम डेटा अगेन एंड अगेन इन द डेटाबेस, बिकॉज देयर आर फ्यू ड्रॉबैक्स विद द रिडंडेंसी. कैन समबडी टेल मी दैट अगर हम रिडंडेंट डेटा ऐड करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द रिडंडेंट डेटा? Basically, we are using the concept of keys to uniquely identify all tuples. इस केस में हमारे पास की क्या है? की फॉर दिस रिलेशन इज स्टूडेंट आईडी, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट आईडी वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टपल्स ऑफ अ रिलेशन. दीज रोज आर नोन एज, रोज को हम बोलते हैं टपल्स. ये क्लियर हुआ? इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ चुका है. सो यू शुड नो दीज टर्म्स. व्हाट आर द टपल्स, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द फील्ड्स. सो रिडंडेंसी क्यों एलिमिनेट करनी है? डेटाबेस में हमें क्यों नहीं रिडंडेंसी चाहिए? रीजन इज कि अगर आपके पास एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मल्टीपल लोकेशंस पे अवेलेबल है, लेट्स अज्यूम दैट स्टूडेंट नेम इज अपडेटेड इन वन टेबल, सो इट हैज टू बी अपडेटेड इन ऑल द टेबल्स. अगर एक ही टेबल में अपडेट कर रहे हो, बाकी टेबल्स में पुराना नाम चल रहा है, दैट विल रिजल्ट इनटू द इनकंसिस्टेंट डेटाबेस. सो insertion, deletion, updation may create a problem if your database is containing the redundant fields. Correct? So in order to reduce or eliminate the redundancy, we use the concept of normalization. But ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? On the concept of the keys. अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं, लेट्स अज्यूम आप सबने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा, फेसबुक अकाउंट और इंस्टा पे अकाउंट होगा, और सिंपल सी चीज है, गूगल पे, जीमेल पे सबका अकाउंट है, राइट? नाउ जब आप अपनी आईडी चूज करते हो तो कई बार आपको शो करते हैं यू कैन नॉट टेक दिस यूजर नेम बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज्ड बाय सम अदर यूजर. आप पासवर्ड कोई भी चूज करो, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज किसी भी यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर नेम. सो नो टू यूजर्स आर अलाउड टू हैव द सेम यूजर नेम. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नो टू पीपल आर हैविंग द सेम जीमेल आईडी. ये पॉइंट क्लियर हुआ? दिस इज जस्ट द ओवरव्यू, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन. So keys are nothing but these are the minimum number of attributes. यहाँ पे minimum attribute कौन से? you uniquely identify कर रहे हैं हर tuple को, that is SID. For example, for this case, key is SID. Here we have key as the SID. अब next आता है हमारे पास what are the different types of keys available in the relational model. Relational model is nothing but where we are storing the data in the form of the tables. Can somebody tell me that what are the different types of keys available? कितने types की keys होती हैं? This is based on whether we are talking about the different types of keys depending on the number of attributes or on the basis of the property. If we are talking about the number of attributes, then these keys are categorized into two types.
One is the simple key, other one is the composite key, or you can call this as a compound key. Composite key. Simple key means when a key is made up of only single attribute. जैसे यहाँ पे हमारे पास जो key बन रही थी, that was containing only the SID, एक ही attribute आ रहा है. So this is the example of simple key. I'll be using these terms, simple key, compound key. So when there is only one attribute, key contains single attribute or one attribute, then it is known as simple key. Composite key is when it is made up of, when key is made up of more than one attribute. More than one attribute. For example, let's assume that one student can enroll in multiple courses. तो वहां पे student ID repeat हो जाएगा. What I'm saying is, let's assume that one student is enrolled in the course relation, and student 1, John, is also enrolled for, everything is same here, is also enrolled in the course, for example, Java. इस course में भी enrolled है. This is very much possible. One student can enroll himself in more than one course. तो यहाँ पे only on the basis of student ID can we uniquely identify a tuple? नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि स्टूडेंट आईडी में हमारे पास वैल्यू रिपीट हो गई. तो इसका मतलब स्टूडेंट आईडी इज नॉट अ की हियर. दिस इज सेपरेट एग्जाम्पल. मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया. प्लीज डोंट मिक्स इट. Don't mix this. This was the example when we assumed no two students, only one student can be enrolled in one case. इसी relation में मैंने changes किए. I have updated this. Let's assume that one student can be enrolled in more than one course. This is when one student is enrolled in one course only. एक student एक ही course में enroll हो सकता है. But what will be the key if one student is enrolled in more than one course? Then what will be the key? More than one course. जब एक से ज्यादा कोर्स में enrolled है कोई student, then what will be the key here? Student ID is now not at all behaving as a key. नेम को की ले सकते हो नहीं, बिकॉज एक ही एट्रीब्यूट में एस नेम के अंदर एक नाम मल्टीपल टाइम्स आ रहा है. एज इज रिपीटेड, डीओबी इज रिपीटेड, कोर्स इज ऑल्सो रिपीटेड. टू डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड इन सी. सो व्हाट विल बी द की फॉर दिस रिलेशन? इज इट पॉसिबल टू हैव अ सिंपल की? आई होप आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया. Simple key is not possible. One thing is clear, one student will be enrolled in course, one particular course only once. अब student 1 अपने आप को course जावा में 2 बार enroll नहीं करेगा, right? तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास SID और course मिलकर key बना रहे. That means when you are taking a combination of SID and course, you can uniquely identify, you can differentiate between the different tuples of a relation. S1 with Java, S1 with C, तो हम uniquely identify कर सकते हैं tuple को. Correct? So in this case, SID and course is a key. Here, this key is made up of 2 attributes. So we can say that this is nothing but this is a composite key, or this is a compound key. Make sense? Is the difference clear between simple key and the composite key or compound key? Second category is on the basis of the property. Here we have the candidate key. A relation can have multiple candidate keys, out of which one key will be selected as the primary key.
Remaining keys are known as the alternate keys. Candidate key is saying that minimum number of attributes. For example, SID के basis पे हम uniquely identify कर सकते हैं. अगर SID और SNAME का combination ले लेते हैं, then also it will be able to uniquely identify all the tuples. So that is known as a super key. And fifth one is the concept of foreign key. When the primary key of one relation is referring to the primary key of the other relation or of the same relation, then that is known as a foreign key. So these are the different types of keys in the relational model. Now let's discuss one by one all the keys. First one is the candidate key. Candidate key is nothing but जो अभी हमने discuss किया, that was a candidate key or simply the key. So it is nothing but it is the minimal set of attributes which can uniquely identify a tuple, that is known as a candidate key. The value of candidate key, जो candidate key की value होती है, that is unique and it can be null. जरूरी नहीं है कि not null होगा, it can be null. There can be more than one candidate key in a relation. एक relation में एक से ज़्यादा candidate key हो सकती है, and the candidate key can be simple. That is, simple key is having only one attribute, or it can be composite as well. तो candidate key कोई भी हो सकती है. It can be simple. Same goes with the primary key. It can be simple key or the composite key. So that's about the candidate key. Next one is the super key. Super key is nothing but that is a superset of a candidate key, or simply you can say that it's a superset of the key. So the set of attributes which can uniquely identify a tuple is known as super key, or we can say that minimal super key is known as a candidate key. Minimal super key means minimum number of attributes which are determining all the attributes of a relation, that is known as the candidate key. Okay, so super key or candidate key में जो major difference है, that is candidate key contains the minimal number of attributes, whereas the super key may contain some extra attributes as well. Okay, so adding zero कैसे find करेंगे? For example, if student ID, I'm taking here the example. For example, we are saying that the candidate key is SID. Attributes, we had many attributes. So if I want to find out the super key, so candidate key is the mandatory thing. ये तो आएगा ही आएगा. इसके साथ आप कुछ और attributes ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते. Adding zero or more attributes to the candidate key. Candidate key is SID. I'm not adding here any attributes. So this is also known as the super key. I'm adding one attribute here along with the SID. I'm adding two attributes. For example, SNAME and age. That's also a super key. SID, date of birth, age, and course. So that means the remaining attributes of a relation, जो candidate key के attributes है, उनको छोड़कर जो बाकी के attributes है relation के, they may or may not be included in the super key. आप उनको add कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते. So this is the meaning of this line. Adding zero or more attributes to candidate key generates the super key. So these are the examples of the super key. Or in simple terms, we can say that this is the smallest, wait a minute, SID is the minimal super key. This is the smallest super key and that is known as the candidate key. So that is what I have written under the note. बच्चे note का मतलब है the important points on the basis of which you can get a question in the exam. So a candidate key is a super key. Every candidate key, अगर किसी relation के लिए एक से ज़्यादा candidate key है, so every candidate key is a super key, but every super key is not a candidate key. So a candidate key is a super key, but vice versa is not true. Or we can say that candidate key is the minimal super key. We can also say that candidate key is the minimal super की. यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी है, 10-15 मिनट्स के लिए और थ्योरी आएगी एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स. ओके,
So let's discuss here now. I hope that you all understood the difference between the candidate key and the super key. Just give me the confirmation if this difference is clear to everyone, because now we are going to solve the types of questions. इस type का question already हम PYQs में कर चुके हैं. कल वाले सेशन में हमने एक क्वेश्चन किया था in which we were given with a relation with the 4 attributes and one candidate key was given. I hope you remember that question. One candidate key was given and we were supposed to return the number of possible super keys and answer was 8. Do you remember that question? तो वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली 2⁻n-1 फॉर्मूला हमने यूज किया था, बट दिस इज नॉट फिक्स्ड. Okay, it depends on the scenario, so we are going to consider the different scenarios. So this is the first question. Let R be the relational schema with n attributes. So here we have n attributes a1 to an, a1, a2, a3. These are the n attributes of the relational schema R. How many super keys are possible with case 1? When a1 is a candidate key, that means only single key is a candidate key. So we have the attributes a1, a2, a3, a4 and so on up to an. If a1 is a candidate key, so that means there is only one way to select a1. यानी कि जो भी आप सुपर कीज बनाओगे, जो भी आपके पास सुपर कीज आएंगी, सब में a1 तो आएगा ही आएगा. Right? A1, A2 can be another super key, A1, A2, A3 can be another super key, like that. A1, A3 is one super key. This way we can find out any number of super keys. कितनी बनेंगी यहाँ पे super keys? Here we have A2. A2 may or may not be a part of the super key. So 2 ways are there to fill this position. Similarly, 2 ways are there to fill A3. A4 भी ले भी सकते और नहीं भी ले सकते. Same goes with AN. सो सारे कॉम्बिनेशंस लेने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब आउट ऑफ n एट्रीब्यूट्स वन एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी, बाकी सबके लिए दो चॉइसेस अवेलेबल है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन रिटर्न द नंबर ऑफ सुपर कीज. कितने एट्रीब्यूट्स के लिए चॉइसेस हैं? फॉर n-1 एट्रीब्यूट. n-1 क्यों बोल रहे हैं? टोटल n एट्रीब्यूट्स है जिनमें से एक मैंडेटरी है, बाकी सारे ऑप्शनल है. So it comes out to be 2⁻n-1. These are the number of super keys possible when A1 is a candidate key. तो जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था वहां पे n की वैल्यू was 4. One simple candidate key was given. So we had to return the super keys. Correct? Next one. Very good, Durga Prasad. Case 2. Here we are given with two candidate keys. A1 is a candidate key. A2 is another candidate key. So we are given with two simple candidate keys. We know that for a relation more than one candidate key is possible. तो आपको दो candidate keys given है and we have to return the number of super keys. Can somebody tell me that with A1 as a candidate key, we have already calculated the number of super keys. When A1 is candidate key, number of super keys are 2⁻n-1. We have already calculated this. Similarly, when A2 is a candidate key, number of super keys are, that means only the attribute A2 is mandatory, remaining attributes are optional. So again we are getting here 2⁻n-1. अगर हमें total number of super keys find करनी है, total number of super keys here, can I only stop here? A1 के साथ 2⁻n-1 है, A2 के साथ 2⁻n-1 है. Can I stop here? No. Reason is जब आपने A1, when candidate key is A1, we have written the super keys. Let's write the super keys with A1 as a candidate key, A2 as a candidate key. So here super keys possible are A1, A1, A2, A1, A2, A3, A1, A3, A1, A2, A3, A4, like that.
Similarly, here A1 is mandatory because candidate key is A1. When A2 is candidate key, A2 is mandatory. A2, A1, A2, A1, A3, A2, A3, A2, A1, A3, A4. Basically, what is happening? A1, A2 यहाँ पे order matter नहीं करता है whether we are writing A1, A2 or A2, A1. So this is the same. जब हमने इसका sum लिया, we are counting this twice. हमने दो बार count किया. When we are considering A1, A2, A3, we are again calculating it twice. A1, A2, A3, A4, A2, A1, A3, A4, we are counting it twice. So what we need to do is हमें एक ही बार count करना, right? आप अगर set theory भी follow करते हो, if we are finding, let us assume that green circle is representing the number of super keys when A1 is a candidate key and yellow circle is representing the set of, यहाँ पे कुछ common super keys आ रही हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको overlap करवाया. So this shaded portion is counted twice. एक बार green वाले circle में count हुए, एक बार yellow वाले circle में हुए. So what is this? Here A1, A2 जब दोनों आ रहे हैं, then only it is counted twice. So this is nothing but 2 raised to power n minus 2. This is counted twice. So one time we need to subtract it. Make sense? Have you understood this point? यहाँ पे हमने n minus 2 क्यों किया? ये क्लियर है सबको? So this is the answer for this question. अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो आपको सिंपल की गिवन हो या कॉम्पोजिट की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इजीली you will get the answer. So quickly tell me that what will be the number of candidate keys? What will be the formula when here we are given with two composite keys? I want you to return the formula for finding the number of super keys here. If you have understood the previous two cases, then you can return the answer here. सब लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. What happened? Same as that of the previous one. दुर्गा प्रसाद, आपने previous question का आंसर रिटर्न किया. Let me call this as 3. Case number 3, case number 4. Are you returning the answer for 3 or 4? 3. So your answer is incorrect. What about others? Here we are saying that we are given with two composite keys. A1, A2 is one key and this is another key. When A1, A2 is a candidate key, तो super keys कितनी आएंगी? Number of super keys. That means A1, A2 is the mandatory part. Remaining attributes are total n attributes है. For example, total 10 attributes है. उनमें से दो निकाल दिए, दो fixed है. Remaining are 8. So remaining attributes are n minus 2 here. Because A1, A2 is mandatory part. Keys क्या बनेंगे आपके पास? A1, A2, A1, A2, A3. A1, A2 तो आएगा ही आएगा. A1, A2, A4. A1, A2, A3, A4. That means A1, A2 is mandatory. Remaining attributes are n minus 2. Minus 2 क्यों कर रहे? Because out of n attributes, 2 attributes has to be a part of the super key. You get this point?
So when A1, A2 is a candidate key, we are getting 2 raised to power n minus 2 super keys. N minus 2 super keys. Similarly, when A3, A4 is a candidate key, जब A3, A4 candidate key है, then also number of super keys are 2 raised to power n minus 2. यहाँ पे दो attributes fixed है 3 and 4. So 2 raised to power n minus 2. अब जब हम A3, A4 के साथ super keys find करेंगे, we'll be getting like A3, A4. We will be getting A1, A3, A4. A1, A2, A3, A4. A3, A4 आना चाहिए. That is the fixed part. बाकी के एट्रीब्यूट्स आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, यही हमने बोले. अब यहाँ पे कुछ कीज आएंगी जो दोनों सेट में रिपीट हो रही हैं. जहां दोनों सेट में कौन सी कीज रिपीट होंगी? जहां पे चारों एट्रीब्यूट प्रेजेंट होंगे, A1, A2, A3, A4. जहां पे चारों एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट पोर्शन इज काउंटेड ट्वाइस. A1, A2. येलो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A3, A4. तो बेसिकली हियर 4 एट्रीब्यूट्स आर कमिंग अप. So minus 2 raised to power n minus 4. Make sense? Is it clear? धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाएंगे. Just tell me that case 3 is clear. Come on, everyone. Quickly give me a confirmation if the case 3, if the formula that we have derived in case 3 is clear to everyone. Yes? If there is no doubt, let's move on to case number 4. Here we are again given with two composite keys A1, A2 and A2, A3. What will be the number of super keys in case 4? Try to return the formula for case 4. Very good. It is with A1, A2, we will be getting 2 raised to power n minus 2 super keys. With A2, A3, we will be getting n minus 2 super keys. But कुछ keys हैं जो दो बार count हो रही हैं. What is that? That is 2 raised to power जिसमें ये सारे attributes आ रहे हो. कौन कौन से attributes है? A1, A2 and A3. So instead of minus 4, we are having minus 3. Very good. All of you are getting the right answer. So I hope that now this concept is clear. If you are given with the candidate keys, are you comfortable in finding the number of super keys? PYQs में हम देख चुके हैं, इसके basis पे straight forward question आता है. Confident? Crystal clear? All right. So this was the question asked in the ISRO exam. Can you tell me that how many super keys are possible in this case? I have not given you the options. How many super keys are possible? Quickly write your answer in the chat section. We are given with the relational schema A, B, C, D, E, where we are given with two candidate keys. So directly we know that how we can use the formula. Number of super keys will be here. Total number of attributes are given as 5. 5 attributes are there.
number of super keys, जो first candidate key है, that is a simple candidate key, so 2 raised to power n minus 1, क्योंकि सिर्फ एक ही attribute आ रहा है a, plus 2 raised to power second candidate key is a composite candidate key with 2 attributes, so it is n minus 2. But there will be some candidate keys which will be counted twice, so we need to subtract it once, so it will be n minus कितने attributes part होने चाहिए mandatory a b c, that is 3 attributes. So just substitute the value 2 raised to power 5 minus 1 plus 2 raised to power 5 minus 2 minus 2 raised to power 5 minus 3. Calculate it. 2 raised to power 4 plus 2 raised to power 3 minus 2 raised to power 2. 16 plus 8 minus 4, that is 20. No, Praneeth, answer is 20. Just check कि आपने कहाँ पे mistake की है. When A is a candidate key, number of super keys are equal to 2 raised to power 5 minus 1. When BC is a candidate key, in that case, number of super keys are 2 raised to power 5 minus 2, क्योंकि दो attributes आ रहे, बाकी कुछ common portion होगा, right? So correct answer for this question is it's 20. This is the answer. So this is about the difference between the candidate key and the super key. Third one is the primary key. We know that every relation will be having only one primary key. और ये प्राइमरी की कैसे सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपके पास पॉसिबल सेट ऑफ कैंडिडेट कीज है उनमें से वन कैंडिडेट की विल बी सेलेक्टेड एज द प्राइमरी की. Okay, so if we have like in this case we had two candidate keys. For example, I'm choosing A as the primary key for the relation, so BC will be known as the alternate key. So there can be more than one candidate key for a relation, out of which one can be chosen as the primary key. Okay, and the remaining candidate keys, are known as alternate keys. तो यूजली जब हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, जिस भी एट्रीब्यूट को, जिस भी कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना है, सिंपली राइट प्राइमरी की एंड कॉलम नेम. फॉर एग्जांपल SID इज द कॉलम नेम. तो दिस वे वी कैन define the primary key. Alternate key we have already discussed. The candidate key other than the primary key is known as the alternate key. Set of candidate keys में से जो primary key आ गई, बाकी की keys को छोड़कर जो भी keys बचती हैं, those are known as the alternate key. This is very very important. Difference between the primary key and the candidate key. We had discussed one question, previous year question, on the basis of the difference between the primary key and the candidate key. सबसे पहला difference है, common thing is जब भी key आ गई तो definitely the key value is unique. So primary key is unique and it is not null, which identify a record uniquely in a table. Okay, there is only one primary key for a relation, whereas in candidate key is also unique, but it may contain the null value, and multiple or more than one candidate key is possible for a relation. अगर हम नल के बेसिस पे बात करते हैं, प्राइमरी की में जो कॉलम है उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती, जबकि कैंडिडेट की में नल वैल्यू हो सकती है. Primary key is the most important part of any relation or the table. Candidate key signifies which key can be used as. Basically, it is providing the proposed primary keys. Primary key is a candidate key, but every candidate key is not a primary key. So candidate key may or may not be a primary key. इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये यूजली ट्रू और फॉल्स में पूछी जाती हैं. क्लियर? So as of now we have talked about candidate key,
super key, primary key and alternate key. Are you all comfortable with these keys? यहां तक किसी को कोई डाउट? Crystal clear. Okay. Anyhow, you need not to focus on noting down the things. तो मैं note down करने का आपको time भी नहीं दे रही हूँ, because I'll share this PDF in the Telegram group. Daily आपको मिल भी रही है. जो लोग नए हैं बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, आपको ये सारे के सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉरेन की. फॉरेन की मीन्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉरेन मीन्स it is referring to the value from some other table, या किसी और attribute की value को refer कर रहे हैं, that is the foreign key. So if an attribute can only take the values which are present as the values of some other attribute, yes, other attribute can be a part of the same table or of the different table. When the values of one attribute is referring to the values of some other attribute, then it is known as the foreign key to the attribute to which it refers. Clear? The relation which is being referenced is known as reference relation. जिस relation को refer कर रहे हैं, that is known as the reference relation, and the corresponding attribute is known as referenced attribute. Let me take the example for the same to give you more clarity. Let us assume that there are two different relations, student and एक और relation हम ले लेते हैं यहाँ पे, that is the enroll relation. This is the relation, so definitely there will be some attributes in the student relation. For example, the attributes are SID, name of the student, and address of a student. I'm just taking three attributes just to understand that what is the meaning of reference and referencing. This marathon is till 6 p.m. No, this is till 7 p.m. Rest it depends on your capacity. जब तक समझ में आ रहा है तब तक कर सकते हैं हम. अगर 6 p.m. के बाद लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो we will end our discussion there. Second relation is the enroll relation. I'm taking here the attribute that is student ID, course ID. Enroll means student किसी ना किसी course में enrolled है and it has paid some fee. Okay, you are just confirming. All right. So here, student table is basically containing the information about all the students. जैसे आप लोग हो है ना, तो जो भी students sessions देख रहे हैं, इनमें से कुछ students होंगे जो किसी ना किसी course में enroll होंगे, and there will be some students जो शायद subscription नहीं लेते, right? Same goes here. Student table is containing the information of all the students. For example, जब आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे फ्री मास्टर क्लासेस अटेंड करते हो तो वहां पे आपने खुद को रजिस्टर किया होगा, करेक्ट? बाय यू माइट हैव प्रोवाइडेड योर मेल आईडी और फोन नंबर, व्हाटएवर इट इज, तो आपने खुद को रजिस्टर किया होगा. तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कौन से रिलेशन में गई? इट इज रिकॉर्डेड इन द स्टूडेंट रिलेशन. बट व्हेन यू गेट द सब्सक्रिप्शन, जब आप फी पे कर देते हो किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, देन योर एंट्री विल बी मेड इन द एनरोल्ड रिलेशन. Similarly here, अब जो स्टूडेंट ने रजिस्टर ही नहीं किया वो डायरेक्टली फी पे कर सकते हैं? नो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू द रजिस्ट्रेशन. दैट मीन्स whatever student ID we are getting here, it should be a part of the student relation. So we can say that if 3 students visited the website, name is John, Mary and John. 2 students can have the same name. Address is something like ABC, XYZ and UVW. Now this student, if I want to insert here, this is the student database. अब अगर मुझे value insert करनी है enrolled relation में, तो student 1 has taken the subscription. It has enrolled for the course. Let's assume that Nilit Scientist B इस बैच की फी पे कर दी, for example 4200. Let us assume that this fee is paid. So is it possible to make this entry in the enroll table? Yes, because this is a valid student, this is a registered student. Basically the student ID is referring to the SID of the student relation. So we can say that student is a referenced relation
ये जो student है, this is, let me write here, we don't have sufficient space. So student is a referenced relation क्योंकि इसको रेफर किया जा रहा है. Whereas enroll is a referencing relation यानी कि ये किसी और टेबल को रेफर कर रहे हैं. This is known as the referencing relation, or you can also call this as the child relation, or also known as child relation, whereas reference relation is also known as the parent relation. Make sense? So this is the meaning of the second point. The relation which is being referenced is known as the referenced relation. जिसको रेफर कर रहे हैं, being referenced is known as the reference relation, and the corresponding attribute is known as the referenced attribute. Referenced attribute. Similarly, the relation which is referring to the reference relation, that is known as the referencing relation, and the corresponding attribute is known as the referencing attribute. For example, according to our example, student ID is the referencing attribute and referenced attribute is SID. ये क्लियर हुआ? डिफरेंस क्लियर? अब हम कुछ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करेंगे. इंसर्शन और डिलीशन के टाइम पे कहां पे प्रॉब्लम आएगी. If I want to insert the values in the referenced relation, कोई नया student आया, can I add here the value? Some new student is coming up with the student ID S5 or S4. Can I add that student here? Is it possible? Insertion के time पे कोई problem आएगी? Address, let's assume we do not know the address, तो अभी के लिए इसको null छोड़ दिया. Is there any problem? कोई प्रॉब्लम नहीं, नया स्टूडेंट आया, so it can be registered. But if I want to insert the value in the enroll relation, for example, I am inserting here student ID S5. Is it possible to enroll a student with the student ID S5? Enroll relation में S5 आ सकता है? Just think logically. Is it possible to add the student ID S5 in the enroll relation? Yes, no, may or may not be. No idea. No, it is not possible because we do not have any student with the ID S5. So enroll relation में S5 कैसे आया? This means that here enroll table में जब हम कोई value insert करते, it may create a problem. It may violate the insertion. It may violate the rule. Correct? Can the referenced attribute and referencing attribute have the same name? Yes. They can have the same name. Clear? तो insertion के time पे enroll relation में problem आ सकती है, but there is no problem while inserting the value. Problem insertion के time पे कहाँ पे create हो सकती है? In the enrolled relation. Insertion may not be allowed, but इस case में reference relation में it is always allowed. There is no problem. Second operation that can be performed is the deletion. For example, we want to delete some value in the relations. अगर मैं enroll relation में, this is not allowed here. If I want to delete the value in the student relation, S1 को मुझे delete करना है. Is it allowed to delete? अगर मैं इसको simply delete कर देती हूँ, what will happen? तो यानी कि ये जो value child relation में use हो रही है, it actually does not exist. So this deletion should be allowed. ऐसे directly allowed नहीं होगी, हमें rule define करना पड़ेगा, या तो allowed ना हो deletion, या फिर here we need to change, we need to update here null.
Correct? This means that deletion may cause violation of the referential integrity constraint in the parent table. कौन सी वैल्यू डिलीट करते हुए प्रॉब्लम आ सकती है? इफ दैट वैल्यू इज यूज्ड इन द चाइल्ड रिलेशन. इफ आई एम डिलीटिंग सम वैल्यू लाइक S3 इज नॉट यूज्ड इन द चाइल्ड रिलेशन, तो आप S3 को डिलीट कर भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमेशा कभी भी हम ये नहीं बोलते कि इट विल क्रिएट वायलेशन. वी ऑलवेज से दैट इट मे क्रिएट वायलेशन. तो 3 रूल्स होते हैं. ऑन डिलीट नो एक्शन, यानी कि डिलीट करने मत दो. ऑन डिलीट सेट नल, यानी कि पेरेंट टेबल से वैल्यू डिलीट कर दो. चाइल्ड रिलेशन में नल वैल्यू सेट कर दो. थर्ड केस होता है ऑन डिलीट कैस्केड. कैस्केड मींस अगर पेरेंट टेबल से एंट्री डिलीट हुई है तो चाइल्ड रिलेशन से भी डिलीट कर दो. सो देयर आर 3 ways टू हैंडल द वायलेशन रूल. I'm coming to the enrolled relation. Now let us assume that we have the entry for the S3 relation here. S3 can be added. It is enrolled in the course. Let us assume GATE, and it has paid a fees of 9,000 rupees. Now, one thing is clear. Reference relation में deletion के time पे may cause deletion में it may create a problem. S3 करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, S1 डिलीट करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, तो डिलीशन में कॉज वायलेशन इन द रेफरेंस रिलेशन. मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल इस स्लाइड पे है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर. अदरवाइज आई क्लियरली क्रिएट अ टेबल ताकि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो. ओके, एनरोल टेबल से अगर मुझे किसी एंट्री को डिलीट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल S3 स्टूडेंट का कोर्स खत्म हो गया. S3 स्टूडेंट का कोर्स खत्म हो गया. दिस वैल्यू इज अवेलेबल इन द पेरेंट टेबल. S3 हैज फिनिश्ड हिज कोर्स, या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर की वैलिडिटी थी, दैट इज ओवर. तो अब इसको क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू डिलीट दिस टपल फ्रॉम द एनरोल्ड रिलेशन. इज इट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम? एक स्टूडेंट रजिस्टर हुआ था, सब्सक्रिप्शन खत्म होगी, अब आप सब्सक्रिप्शन यूज नहीं कर पा रहे, जो सब्सक्रिप्शन के अंडर सेशंस में वो एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट टेक्स्ट बुक पे जो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेशंस हैं, फ्री सेशंस है, वो तो एक्सेस कर ही सकते हो. सो दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. डायरेक्टली वी कैन delete this value, so it is not going to create any problem. No problem while deleting the entry from the enrolled relation. Clear? Insertion deletion clear. Same goes with the updation. जब हम value update करते हैं, if I'm updating the student ID or student name in the relation, जो भी value को आप यहाँ पे refer कर रहे हो, if this is updated, then that updation has to be made in the enrolled relation as well. Correct? So updation may create a violation. So these are the referential integrity constraints. This is the overview. ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. ओके, सो अनोमलीज रिलेशनल मॉडल में कौन सी आती है? इंसर्शन अनोमली, डिलीशन एंड अपडेशन अनोमली. इंसर्शन अनोमली इज सेइंग दैट समटाइम्स व्हेन the value is available at multiple places, when we are adding the value in one relation, then that value is not present in the other relation, तो insertion हम allow नहीं कर सकते. ये insertion problem किस में आ रही है? Only in the child relation. पेरेंट टेबल में आप कभी भी कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, यानी कि प्रॉब्लम किस में आती है? रेफरेंसिंग रिलेशन, चाइल्ड रिलेशन. कैन वी इंसर्ट अ टपल नॉट इन स्टूडेंट टेबल? वी कैन इंसर्ट अ टपल इन द स्टूडेंट टेबल, बट जो भी आप SID, ओके, स्टूडेंट टेबल में आप कोई भी टपल ऐड कर सकते हो. लेट्स अज्यूम दैट न्यू स्टूडेंट इज एडेड S5 विद द नेम समथिंग लाइक, आपका ही नाम ले लेते हैं, मनीष. S5 Manish, and address, let's assume we do not know the address. So any number of users, any number of entries can be added to the student relation. There is no issue. कोई problem नहीं है. Registration हो सकती है. It is not dependent on the value. SID is not at all dependent on any other relation, right? Dependent कौन है? Student ID of enrolled relation is dependent on the SID of the student relation. तो SID की तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है. क्लियर?
insert in enrolled relation. Enrolled relation में अगर S5 insert किया है then it is allowed. Let us assume that I want to insert here a student with the SID S7. Is it allowed? स्टूडेंट आईडी में कौन सी वैल्यूज आ सकती है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, स्टूडेंट आईडी में सिर्फ वो वैल्यूज आ सकती हैं जो एसआईडी में अवेलेबल है. S7 इज इट प्रेजेंट इन एसआईडी ऑफ द स्टूडेंट रिलेशन? डिपेंडेंसी को अंडरस्टैंड करो. एनरोल्ड रिलेशन में जो स्टूडेंट आईडी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एसआईडी ऑफ स्टूडेंट रिलेशन. अब मुझे S7 ऐड करना है तो हम ऐड नहीं कर सकते एनरोल्ड रिलेशन में, बट अगर मुझे S1, S2, S3, S4, S6 ये जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं इनमें से कोई भी वैल्यू एनरोल टेबल में इंसर्ट हो सकती है. Is this point clear? Come on guys, is this point clear? So this is what I have written here. प्रॉब्लम कब आती है इंसर्शन में? सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी. इफ अ टपल इज इंसर्टेड इन रेफरेंसिंग रिलेशन, रेफरेंसिंग रिलेशन कौन से? चाइल्ड रिलेशन. अगर हम रेफरेंसिंग रिलेशन में वैल्यू ऐड करें एंड रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट टेबल, जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो चाइल्ड रिलेशन में और वो पेरेंट टेबल में वैल्यू अवेलेबल नहीं है, then the insertion is not allowed in the referencing relation. तो यानी कि इंसर्शन अनॉमली किस में प्रॉब्लम, इंसर्शन अनॉमली किस में आती है? ओनली इन द रेफरेंसिंग रिलेशन. वेयर एज डिलीशन और अपडेशन किस में होगी? अगर पेरेंट टेबल में कोई वैल्यू डिलीट हो रही है या अपडेट हो रही है एंड दैट इज यूज्ड बाय द चाइल्ड रिलेशन, तो डेफिनेटली इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड. So if a tuple is deleted or updated from the referenced relation and referenced attribute value, जो parent table की attribute की value है वो referencing relation में use हो रही है and is used by the referencing attribute in the referencing relation, it will not allow deleting the tuple from the referenced relation. तो उस केस में हमारे पास deletion allowed नहीं होगी. अगर deletion allow करनी है then either we should go for cascading delete or we need to set the value to null. तो अगर डिलीशन अलाउ करनी है तो कौन से दो रूल्स आएंगे? वैसे तो अलाउड नहीं होगा, या फिर डिलीशन या अपडेशन को अगर अलाउ करवाना है then either we need to set the value in the child relation, क्योंकि अब चाइल्ड के पास तो वैल्यू पेरेंट टेबल की है, पेरेंट टेबल वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो we will set the value in the child relation as null. या फिर वैल्यू दोनों टेबल से डिलीट होगी. अगर पेरेंट टेबल से डिलीट हुई है तो चाइल्ड रिलेशन से भी डिलीट होगी. सो इफ अ टपल इज डिलीटेड और अपडेटेड फ्रॉम द रेफरेंस रिलेशन, यानी कि पेरेंट टेबल से वैल्यू डिलीट या अपडेट हुई है, then that value is used by the child relation, then it will update or delete from the table reference relation and set the value of the referencing attribute to null. यानी कि corresponding value in child relation will be set to null. For example, if I'm deleting this S1, तो यहाँ पे S1 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी? It will be set to null. This is the meaning of on delete set null. But प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा? कब आप नल वैल्यू सेट नहीं कर पाओगे? जब आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हो, अगर वहां पे आपने कॉन्स्ट्रेंट लगाया हुआ है दैट दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैन नॉट हैव द नल वैल्यू, तो वहां पे सेट नल फेल हो जाएगा. जैसे ही नल वैल्यू सेट करना शुरू करेगा इट विल गिव यू एन एरर. सेट डिफॉल्ट ऑल्सो देयर, राइट? यस, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कॉन्स्ट्रेंट. अगर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट आईडी के ऊपर नहीं लगाई हुई है तो नल सेट कर देगा, बट अदरवाइज इट विल नॉट बी अलाउड टू सेट द नल. सेकेंड केस इज ऑन डिलीट और अपडेट कैस्केड, यानी कि अगर पेरेंट टेबल से कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट हुई है विच इज यूज्ड बाय द चाइल्ड रिलेशन, तो वो वैल्यू चाइल्ड रिलेशन से भी डिलीट होगी. yesterday we had discussed one question based on the concept of cascade.
So this was the question. If you remember this, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था? A is the primary key of some relation and C is the foreign key which is referring to, किसको रेफर कर रहे हैं? A को, right? Here it is given that C be the foreign key that refers to A. यानी कि C एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ वो वैल्यूज आ सकती हैं जो एट्रीब्यूट A के अंडर वैल्यूज है. You can see here C में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? It is 4, 4, 3, 2, 2, 5, 4. Only these values are coming up. Correct? Yes. And here, how many additional? Okay. How many additional tuples will be deleted when the tuple 2, 4 is deleted? तो एडिशनल कितने टपल्स डिलीट होंगे? यहाँ पे एट्रीब्यूट ए में हमारे पास 7 भी है, 9 भी है. दैट इज नॉट यूज्ड बाय सी. दैट्स परफेक्टली फाइन. बट सी में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो ए का पार्ट नहीं है. नाउ आई वांट टू डिलीट दिस टपल. कल हमने डिस्कस किया, जब आपने इस टपल को डिलीट किया तो इसका मतलब वैल्यू 2 डज नॉट एग्जिस्ट. तो यानी कि सी के अंदर ऐसी कोई वैल्यू, कोई भी टपल नहीं होना चाहिए जिसकी वैल्यू 2 हो. चेक करो 2 कहीं पे आ रहा है. यस, दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज नॉट अलाउड. यहाँ पे क्या बोला है? ऑन डिलीट कैस्केड. कैस्केड मीन्स एंट्रीज डिलीट होंगी. सो दिस विल बी डिलीटेड, दिस विल ऑल्सो बी डिलीटेड. जब आपने इन दो रोज को डिलीट किया तो वैल्यू 5 और 7 भी चलेगी, राइट? चेक करो सी में कहीं पे 5 और 7 आ रहे हैं. यस, 5 इज कमिंग अप हियर. सो दिस विल ऑल्सो बी डिलीटेड. 9 गया. So 2, 5, 7, 9 should not be a part of the attribute C. It's not there. So this means that कितने additional tuples delete हुए? 3 additional tuples. जो कल हमारे पास क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें tuples की values given थी. So option C was given as 5, 2, 7, 2 and 9, 5. This was option C, right? That was the question asked in NILT exam. This was the question asked in the GATE exam. सेम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ टपल्स पूछे, निलेट में आपसे ये पूछा था कौन से टपल्स डिलीट हुए. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन की. डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन की एंड द प्राइमरी की. फॉरेन की में नल वैल्यूज हो सकती हैं, प्राइमरी की में नहीं हो सकती हैं. प्राइमरी की इज यूज्ड टू एंश्योर दैट द डेटा इन अ स्पेसिफिक कॉलम इज यूनिक, whereas foreign key is basically used for the referencing purpose. A foreign key is a column or a group of columns in a relational database that provides a link between two tables. जब refer कर रहे हैं तो obviously that means the link is created. It uniquely identifies a record in the relational database. Primary key is used to uniquely identify the tuple, whereas foreign key is used to refer to the primary key of some other relation. तो कुछ set of values को refer कर रहे हैं. For that foreign key is used. Only one primary key is allowed in a table, whereas a relation can have more than one foreign key. Primary key is a combination of unique. Primary key में हमेशा unique values आएंगी और not null होंगी. जबकि foreign key में आपके पास duplicate values are allowed in a relation. It may contain duplicate values in a relation. It does not allow the null values, whereas the foreign key can also contain null values. अभी हमने देखा जब हम set null करेंगे तब obviously it will contain the null values. So null values are allowed in the foreign key. Its values cannot be deleted from the parent table. Here values can be deleted from the child table. यानी कि जब हम deletion करते हैं तो parent table से directly हम deletion नहीं कर सकते. That is causing the violation. Whereas from the child relation, anyhow we can delete the values. So this is the concept of the keys, and we have discussed various type of questions that can be asked in the exam. और हमने किए भी हैं क्वेश्चन. तो particularly 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कीज के बेसिस पे. Depends on the number of super keys. They may ask the question on the basis of the true or false statements. एंड थर्ड वन इज हमने फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट देखा, उसके बेसिस पे ऑन डिलीट कैस्केड के साथ कितनी वैल्यूज होंगी. एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे ऑन डिलीट सेट नल में हाउ मेनी टपल्स विल बी डिलीटेड, एडिशनल टपल्स विल बी डिलीटेड लाइक दैट. तो डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स कैन बी इम्पोज्ड. To get this PDF, to get the PDF of all the YouTube sessions,
you have to join the Telegram group, that is Shefali ma'am textbook. बच्चे description box में lot many links are given. One for the master class, other one for the subscription super coaching. Third link is for the Telegram. तो please carefully check कि आप कौन से लिंक पे क्लिक कर रहे हो. टेलीग्राम के आगे टेलीग्राम लिखा हुआ है. सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू गेट द PDF. ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको. बट डेफिनेटली यूट्यूब पे 100% नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे. उसके लिए आपको सुपर कोचिंग चाहिए होगा. डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग विल बी देयर. जैसे कल एक डाउट पोस्ट किया था टेलीग्राम ग्रुप में. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग दैट डाउट इन द लाइव सेशन. तो आप लोग अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में एंड आई विल डिस्कस दैट थ्रू द लाइव सेशन, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए. क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, sometimes it's not possible to explain the concept properly क्योंकि typing करना is not feasible sometimes. तो लाइव सेशन में मैं आपके डाउट्स लूंगी. यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी एंड ऑल्सो द quizzes and the polls will be conducted in this group. Link is given in the description box. नहीं मिलता है, नहीं कर पा रहे हो, just search for Shefali ma'am textbook. Easily you'll be able to get that. So this is about the concept of the keys. Are you all comfortable with the keys concept? इतना clear हो गया सबको? Guys, quickly give me the confirmation if till this point it's clear. Next concept is the functional dependency. Let's talk about what is functional dependency. Database design में हमारे पास हर जगह पे हम term use करते हैं, this functional dependency said this and that. So what is this functional dependency? When let's consider a very simple functional dependency. Let's assume that x determines y. इसको read कैसे करते हैं? This simply means that x determines y. इसका मतलब क्या? That means if we know the value of x, then we can find out the value of y. This dependency will exist if we are saying that x determines y exist in the relation R. ये कब exist करेगी? If in a relation R, I'm just taking the attributes x and y is subset of x. This is not the mandatory case. जरूरी नहीं है कि right side पे जो भी आपके पास आएगा that will be a subset of x. कई बार क्या होता है, if I'm saying SID is determining, if I know the roll number of a student, I can determine the name of a student. This is a valid dependency. SID determines S name. So can I say that S name is a subset of SID? SID एक single attribute है, तो this is already atomic attribute, right? एक ही है. Can you divide SID? No. Subset का मतलब है जब आपके पास एक से ज्यादा attribute है, then we can find out the subset. यहाँ पे subset बन ही नहीं रहा है. So this is not the mandatory case that on the right hand side will always be having the attribute that will be a subset of the set of attributes which are present on the left hand side. So this statement is incorrect. Okay. So x and y are two attributes. If I'm saying that I know the SID of a student, then I can determine the name of a student. X determines y. I guess that it will be more easy to understand. SID, and I'm assuming that SID is unique. So if I know the SID of a student, I can determine the name of a student. For example, John. SID is 2, I can determine the name of a student. Two students can have the same name. That's it. Okay. So here what we are saying is if there are two tuples, if I have provided the SID, then I'm getting a simple one name, right? So this is valid dependency. In this case, SID determines S name. I'm taking here another set of values. If I'm saying SID is 1, name is B, then can we say that SID is determining the S name? Is it valid here? SID is determining the S name? ये determine नहीं कर रहा. कैसे नहीं कर रहा? अगर मैंने बोला कि रोल नंबर 1 का क्या नाम है, then it is returning two values A and B. That means
ambiguity is there, so it is not a valid dependency. This case, second, this is case 1, this is correct, ये correct है. Case 2 is incorrect. So SID is not determining the S name. So determines means अगर आपको left hand side वाले attribute की value पता है, then you are going to get a unique value. So we can say that X, अब इसको mathematically लिखते X determines Y exists. Let us assume that here we have two tuples T1 and T2. Value is X1, value is X2. So if it uniquely determines the value, if these two values are same, then this is also same. If T1 of X is X1, T2 of X is also X1, तो Y की value भी same आएगी. यहाँ पे मैंने क्या किया? X की value तो same ली, but Y की value different. Either this is different, तो dependency का मतलब है अगर आपके पास first attribute में value same है, if I'm saying that X1 के corresponding Y की value क्या आएगी? That is also same, then we can say that X determines Y. Dependency का मतलब clear हुआ? I can also write this as X1, X2, Y1, Y2. This is also valid. X1, X1, Y1, Y2, this is invalid case because corresponding to X1, we are getting two different values. Simple. So this is the meaning of functional dependency. There are three types of functional dependencies: trivial functional dependency, non-trivial functional dependency, and semi-non-trivial functional dependency. Trivial dependency is which is something like but obvious, like if I'm saying that SID is determining SID, this is what? This is a trivial functional dependency. कोई भी attribute है वो खुद को determine करेगा ही करेगा. अगर मैंने पूछा कि दुर्गा प्रसाद what is your name, you'll be like it's दुर्गा प्रसाद only. ये कैसा कोई question पूछा मैम आपने? So this is but obvious. So SID can always determine SID. X can always determine X. This is a trivial dependency. Non-trivial means which is not obvious. For example, if I'm saying that X determines Y. So this is non-trivial dependency, or we can say that there is functional dependency is said to be non-trivial functional dependency अगर आपके पास left hand side attributes and right hand side attributes में कोई भी common attribute नहीं है. That is, if X intersection Y is equal to 5, there is no common attribute between left hand side and right hand side. Okay, that is non-trivial functional dependency. Semi-non-trivial is it's a combination of trivial and non-trivial functional dependency. For example, I am saying that X determines XY. तो इसका मतलब क्या है? This means that X determines X and X determines Y. X determines X is trivial dependency. X determines Y is non-trivial functional dependency. So it is known as semi-non-trivial functional dependency. Semi-non-trivial means which is neither completely trivial nor completely non-trivial functional dependency. So these are the different types of, yes, mixture. This is these are the different types of functional dependencies. Clear? जब हम attribute closure find करते हैं, मैंने term check करवाई थी आपसे when we looked for the dependencies, तो मैंने ये बोला था find out the non-trivial functional dependency. जब हम लोगों ने dependency preservation check किया था equation में, there I used the term non-trivial, find out all the non-trivial functional dependencies. So this is the meaning of non-trivial functional dependency. Correct? Next, very important concept जो काफी widely हम use करते हैं. It doesn't matter whether we are looking for the decomposition of a relation or we are just calculating, we are finding the normal form or straightforward question आपके पास attribute closure पे भी आता है. In general, we have 5 major applications of the attribute closure. Okay, so very important concept. Understand this carefully.
Before starting with attribute closer, just let me know till this point, is there any doubt? यहां तक किसी को कोई डाउट? Crystal clear. All right. What about others? I guess अभी मैराथन्स की कैपेसिटी नहीं बनी है ना? Okay. Set of all attributes functionally determined by given attribute X is known as attribute closure. Let us assume that I want to find out attribute closure. Attribute क्या है यहाँ पे X and X का closure मुझे find करना है. So plus is written as the superscript. So this is how we represent the closure. This indicates that we are finding X closure. Okay, so a set of all attributes functionally determined by the given attribute. Let us assume that there is a relation R with the attributes A, B, C, D, and we are given with the functional dependency set, that is A determines B, B determines C, and C determines D. This is the given functional dependency set. I want to find out A closure. तो कोई भी एट्रीब्यूट है वो खुद को तो हमेशा डिटरमाइन करेगा ही करेगा. यस, एट्रीब्यूट क्लोजर, जिस भी एट्रीब्यूट का आप क्लोजर डिटरमाइन कर रहे हो, इट विल ऑलवेज डिटरमाइन इटसेल्फ. सो ए क्लोजर अगर मुझे फाइंड करना है, दैट मीन्स ए विल श्योरली डिटरमाइन इटसेल्फ. इसके लिए हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं. करेक्ट. नेक्स्ट, A is determining, we have the dependency which says that A determines B. इसका मतलब ये है कि अगर हमें A की वैल्यू पता है, A is determining B. B is determining C. B यहाँ पे आ गया, so B is determining C. C is determining D. So we can say that A closure is A, B, C, D. Similarly, if I want to find out B closure is what? B is determining itself. B is determining C. C is determining D. C closure is C is determining itself. C is determining D. D closure is D only. Correct? Usually हमें trivial functional dependencies find करने की जरूरत नहीं पड़ती है, but definitely हमें non-trivial functional dependencies find करनी पड़ती है. So here what all non-trivial functional dependencies are possible here? A is determining A. That is what? That is trivial functional dependency. Non-trivial functional dependency के A is determining B. This is one of the non-trivial functional dependency. A is determining C. That is non-trivial functional dependency. A is determining D. This is also non-trivial functional dependency. Similarly, B is determining C. This is non-trivial functional dependency. B is determining D. That is also non-trivial functional dependency. C is determining D, that is non-trivial functional dependency. D is determining D, that is trivial. So these are the possible non-trivial functional dependencies. So by using the attribute closure, we can find out the possible non-trivial functional dependencies. Attribute closure के basis पे कैसे question आ सकता है? You might be given with some relation and a functional dependency set, and you will be given with 4 options. कि closure find करना है, which of the following is not correct. So you have to simply determine the closure. Will you be able to do that? You comfortable with the attribute closure? So there are majorly 5 applications of the attribute closure. Using the attribute closure, we can find out the super keys. We can identify the super keys. So if we know the candidate key, basically अगर कोई भी attribute closure find करके, if it is determining all attributes of a relation, that is known as a key. Key is nothing but attribute closure, minimum set of attributes, attribute if attribute closure is determining all attributes of a relation, all attributes of a relation, that is known as super key. मैं यहाँ पे
कैंडिडेट की या की क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, वी आर टेकिंग टू एट्रीब्यूट्स एंड दोनों का एट्रीब्यूट क्लोजर मिलके इट इज डिटरमाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन. कैंडिडेट की क्या होती है, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो अगर आपके पास कॉम्पोजिट सुपर की है तो हम सबसेट्स का क्लोजर फाइंड करेंगे. इफ इट सबसेट closure is also determining all attributes of a relation, then we will say that the key is the super key, not the candidate key. Okay, so in this case we have calculated the closures, right? So in this case what will be the candidate key? A closure is determining all attributes of a relation, so we can say that A is a key here. Key is A. Can I say that B is also a key? No, B is not determining all attributes of a relation. Same goes with C and D. So here key is only A. So using the attribute closure, we can find out the super keys. और जो भी आपने super key find की है, all those the attributes of the super key are the mandatory attributes to determine all the attributes of a relation. So we will say that that's also a candidate key. So these are the first two applications of the attribute closure. That is, we can identify the super keys. We can also determine the candidate keys. Candidate key is nothing but that is a minimal super key. Super key हमें मालूम है. Let R be a relational schema and X be the attribute set. कोई attribute set है. I'm not saying X is an attribute. It is an attribute set over R. और हम इस attribute set का closure find कर रहे हैं. If this attribute set closure is determining all attributes of a relation, then it is said to be the super key of the relation R. And if this super key is the minimal super key, then we will say that it's a candidate key. Membership test check कर सकते हैं. आपको कोई dependency given है, you have to check that whether the given dependency is a part of the given relation or the given functional dependency set. For that also we will be finding the attribute closure. For example, यहाँ पे आपको 3 dependencies given थी. अब अगर आपसे पूछ लिया check, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? check if A determines C is a member of given functional dependency set. तो कैसे चेक करेंगे? A determines C चेक करने, we will find out A closure. A closure find किया, आप चेक करो कि A closure से C को determine कर पा रहे. Yes, so we can say that A determines C is a member of the given functional dependency set. So this is how the third application works, membership test. Fourth one is functional dependency set closure. बहुत rarely question आता है functional dependency set closure के ऊपर. Equality between, fifth one is, or let me write here the fifth application. Fifth one is, it is used to check the equality between functional dependency set. Basically ये equality हमें तब check करनी पड़ती है when we are going to decompose the relation. जब आपने relation को decompose किया है, dependencies decompose हुई हैं, then we need to check whether the relations, all the functional dependencies set are equal or not. Okay, so that is about the fifth application. So majorly जो frequently use होगा, we will be using the first two applications very frequently. Okay, so here we are given with the relation. I want to identify the candidate key. एक रिलेशन के लिए एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, दैट इज क्लियर टू एवरीवन. अब कैंडिडेट कीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं करूंगी, बाकी के आप लोग करोगे. ओके, सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट्स है, स्टार्ट विद दैट एट्रीब्यूट सेट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, आई विल फाइंड आउट ए बी क्लोजर. AB is going to determine itself. खुद को तो determine करेगा ही. What about the other attributes? AB is determining C. Yes. C is determining D. Yes. And B भी आ चुके. B is determining E. तो B आ चुके. B is determining E. So AB closure is determining all the attributes of a relation. So we can say that
डायरेक्टली मैं इसको कैंडिडेट की नहीं बोलूंगी बिकॉज आई डू नॉट नो whether its subset is also determining all attributes of a relation or not. So super key is one of the super key is AB. बट हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? वी नीड टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की. जब भी आपके पास, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, क्योंकि नॉर्मली जब नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो वहां पे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, सुपर की को ही कैंडिडेट की मान के शुरू कर देते हैं. सो ए क्लोजर चेक करो. दो, अगर हम सबसेट फाइंड करते हैं तो सिर्फ ए आ सकते हैं आपके पास, सिर्फ बी आ सकते हैं. ए क्लोजर विल बी ए इज डिटरमाइनिंग इटसेल्फ. अकेला ए किसी और को डिटरमाइन करे, ए बी मिलकर सी को डिटरमाइन करे, अलोन ए इज नॉट डिटरमाइनिंग एनी अदर एट्रीब्यूट, सो विल स्टॉप हियर. बी क्लोजर, बी इज डिटरमाइनिंग इटसेल्फ, बी इज डिटरमाइनिंग ई, दैट्स इट. सो ए बी का प्रॉपर सबसेट is not able to determine all attributes of a relation, so we can say that this is the minimal number of attributes. कम से कम हमें ए बी तो चाहिए ही चाहिए in order to determine all attributes of a relation. So this is the minimum number of attributes. This is the minimal super key. So we can say that here in this relation we are getting candidate key, that is AB. एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती है. हिंट कैसे मिलेगा? जो आपके पास की के एट्रीब्यूट्स है. आई बी यूजिंग टू मोर टर्म्स. वन इज द प्राइम एट्रीब्यूट. Prime attribute, that is also known as key attribute. Key attribute means any attribute that's a part of any key. कोई भी एट्रीब्यूट जो किसी भी की का पार्ट है, सारी कीज का होना जरूरी नहीं है, किसी भी की का पार्ट है, दैट इज नोन एज प्राइम एट्रीब्यूट. एंड रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. Non prime attributes, that is also known as the non key attributes. अब यहाँ पे देखो की बनी है हमारे पास ए बी से. So here prime attributes are A is a prime attribute, it's a part of key. B is a part of key, so B is a prime attribute. जो prime attribute है, any prime attribute is coming on the right hand side of any functional dependency. किसी भी dependency की right side पे आ रहे. A and B check करो. C is there, D is there, E is there. A, B किसी भी dependency के right side पे नहीं आ रहे. This means that there is no scope of getting any other candidate key. So for this relation there is only one candidate key, that is AB. Prime attributes are AB only. तो non prime attributes क्या होंगे? Remaining attributes of a relation. Relation में आपके पास 5 attributes थे, out of which 2 attributes are the prime attributes. So remaining attributes C, D, E are known as non prime attributes. Non prime proper subset of key is determining non prime attribute. तो प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टर्म्स हम नॉर्मलाइजेशन में यूज करेंगे. तो जब भी हमें नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वी नीड टू करेक्टली आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज, प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. ये तीनों टर्म्स क्लियर हुई. So basically we'll focus on finding the set of candidate keys, prime attributes and non prime attributes. आज के सेशन में इसके ऊपर ही हम प्रैक्टिस करेंगे. इन द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद remaining applications and the concept of normalization and decomposition. So here we are given with a functional dependency set. Identify the candidate keys. I want you to return the candidate keys, prime attributes and non-prime attributes. B and AB is a candidate key. Durga Prasad, isn't it incorrect? Candidate key होती है minimal number of attributes. अगर B अकेला सारे attributes को determine कर रहे हैं,
तो फिर ए बी कैंडिडेट की कैसे हुई? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ए बी. कहां से स्टार्ट करेंगे? ए बी से. फाइंड आउट ए बी क्लोजर. AB is determining itself, AB is determining C, C is determining D, and B is also determining EA. A already हम ले चुके हैं. So AB is determining all the attributes of a relation. So let me call this as a super key. मैं अभी इसको candidate key नहीं बोलूंगी because यहाँ पे subset is possible. Now I'll find out A closer. A is determining itself. That's it. B closer. B is determining itself. We are finding B closer now. B is determining itself. B determines EA. A, B मिलकर C को determine कर रहे हैं and C is determining D. So super key का proper subset is determining all attributes of relation. So we will say that this is a candidate key. Every candidate key is a super key. So definitely B is also a super key. But this super key is not candidate key. और ये point हम पहले ही note में discuss कर चुके. Every super key may not be a candidate key. So here we have to identify the candidate key. So one of the candidate key is B. तो prime attribute में B आएगा. Non prime attribute अभी जब तक हमारे पास पूरा set prime attributes का नहीं आता, we cannot find out the non prime attributes. Now check B is a prime attribute. Is it present on the right hand side of any functional dependency? No. This means that there is no other possibility of getting the candidate key. So for this relation, only one candidate key is there. Only one prime attribute is there. Non-prime attributes will be A, C, D, and E. Durga Prasad, B नहीं आएगा non-prime attributes में. Because B is a part of one of the candidate keys, so it's a prime attribute. So E, A, C, D are non-prime. Okay, you have written the B closer. आपने बताया कि non-prime attributes are C, D, E. What about A? I got it. What about A? Prime attribute, अगर candidate की B है तो prime attribute B है. तो A कहाँ गया? A को ना आपने prime attributes में cover किया, ना ही non-prime attributes में. Yes, A has to be a part of non-prime attribute. So quickly return the answer for these questions. I'll be giving you 6 to 7 questions. Identify the candidate key, prime attributes, and non-prime attributes. A and B, C are the, okay. So A, first of all, we'll start from A. A closer. A closer is A is determining itself. A is determining B, C, D, E. तो डायरेक्टली हम इसको कैंडिडेट की बोल सकते हैं बिकॉज इट इज डिटरमाइनिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स. ए क्लोजर का सबसेट इज नॉट पॉसिबल. सो ए प्राइम एट्रीब्यूट में आपके पास ए आ गया. अब चेक करो प्राइम एट्रीब्यूट ए, इज इट प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी? A is present on the right hand side of BC. So what I'll do is I'll replace this A with BC. We'll find out B closer. BC closer will be determining itself. Basically idea क्या है, अगर कोई भी attribute candidate key को determine कर रहे हैं तो definitely it will determine all the attributes. So BC is determining A and A सारे attributes को determine कर रहे हैं. D, E, E. तो मैं इसको सुपर की बोलूंगी बिकॉज यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं. बी क्लोजर इज बी ओनली, सी क्लोजर इज सी ओनली. सो दिस इज द मिनिमल सुपर की. मिनिमल सुपर की मीन्स कैंडिडेट की.
BC is another candidate key. So prime attributes में B and C भी आ गए. Now check A, B, C. ये तीन प्राइम एट्रीब्यूट्स है. कहीं किसी डिपेंडेंसी की राइट हैंड साइड पे आ रहा है. E नॉट प्राइम एट्रीब्यूट. A ऑलरेडी कवर कर चुके. BC is present on right hand side of A. Already we have covered this. So this means that there is no other possibility of getting a candidate key. Non-prime attributes. Remaining attributes of the relation R are the non-prime attributes. So D and E are the non-prime attributes. Comfortable? Next one. Dependency. Determine the candidate keys. Prime attribute. Non-prime attribute. A, D are candidate keys. That's it. Let's check here. First of all, we have checked for A closer. A is determining itself. A is determining B. B is determining C. C is determining D. So A closer is determining all attributes. Subset is not possible. So A is a candidate key. Prime attribute में A आ जाएगा. A is present on the right hand side of D, so we'll be replacing this A with D closer. D is determining itself, D is determining A is determining B, B is determining C. So D is also a candidate key. तो अगर candidate key है तो prime attribute भी है. D is present on right hand side of C. क्या कर रहे हैं हम prime attribute check कर रहे हैं. So D is present on right hand side of C. We'll check for. I'm replacing this D with C. C closer is C is determining C, D is determining A is determining B. So C is also a candidate key. C is present on the right hand side of B, so I am replacing it with B. B closer is B, B is determining C, C is determining D and D is determining A. So B is also a candidate key, prime attribute. B is present on right hand side of A, we have already covered it. So we'll stop here. So 4 prime attributes are there in the given relation. D, E are the non-prime attributes. No, Praneet. पहली चीज हमारे पास relation R में सिर्फ 4 ही attributes है. E is not a part of this relation. Second thing is here all the attributes are the prime attributes A, B, C, D. Since all the attributes are the prime attributes, so there is no non-prime attribute. That is fine. Clear? So is it clear कि किस तरीके से हमें हिंट मिलता है कि I have answered for last question. Okay. तो ये सबको क्लियर हुआ कि हमें कहां से हिंट मिलता है कि एक से ज्यादा कैंडिडेट की पॉसिबल है. सो द मेन गोल मेन फाइट आपको फर्स्ट कैंडिडेट की फाइंड करने तक की है. उसके बाद ज्यादा कुछ फाइंड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. देयर वाज अ बफर एट माय एंड, सॉरी. नो इश्यूज. यस, जब भी आपके पास कैंडिडेट की आ जाए तो हम की एट्रीब्यूट्स में ले सकते हैं उसको. दैट इज प्राइम एट्रीब्यूट. उसके बाद सिंपली वी हैव टू चेक whether the prime attribute is present on the right hand side of any dependency. अगर है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट से रिप्लेस करवा. दैट इज द लॉजिक. नेक्स्ट, in this relation 6 attributes are given and you are supposed to find out the candidate keys, prime attributes, and non-prime attributes.
AB, AF, AE, AD and AC. Okay. AB, AF, AE, AD and AC. So what are the prime attributes? A, B, C, D, E, F, all are the prime attributes. Non-prime attributes are 5. No non-prime attribute is there. Correct. कैसे चेक किया? जिन लोगों का नहीं आया आंसर, लेट अस फाइंड इट आउट. स्टार्ट कहां से करेंगे? फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड से, ए बी क्लोजर. So AB is determining itself, AB is determining C, C is determining D, D is determining E, E is determining F. इसको मैं डायरेक्टली कैंडिडेट की नहीं बोलूंगी क्योंकि दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, सो आई एम कॉलिंग दिस एज अ सुपर की. Now let us check for the proper subset closure. A closure is A only, B closure is B only. यानी कि दोनों attributes चाहिए to determine all the attributes of relation. So AB is a candidate key. Now prime attributes में आपके पास A और B आ गए. Check A or B is present on right hand side of any dependency. B is present on right hand side of F. So we'll be replacing this B. सिर्फ किसको replace कर रहे हैं? B को किससे replace कर रहे हैं? F से. Find out AF closure. AF, F is determining B और AB मिलकर सारे attributes को determine कर रहे थे. A closure already हम check कर चुके हैं. एक बार F closure भी find कर लो. F closure is FB, so not determining all the attributes of relation. Another key is AF. So F is also included as the prime attribute. Now F is present on the right hand side of E, so we'll be replacing this F with E. इसको replace करवाया E के साथ. AE, E is determining F, F is determining B, B is determining C and C is determining D. So it is determining all the attributes. Subset check कर लो. A closure already check कर चुके हैं. E, F, B. So AE is another candidate key. Now E is present on the right hand side of D. So that's why we are replacing this E with D. AD, D is determining E, E is determining F, F is determining B, AB is determining C. So D is also included as the prime attribute. AD is another candidate key. D closer जब check करोगे, it is D, E, F, B. आप मोर ओवर यहाँ से चेक कर सकते हो. C को सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी डिटरमाइन कर रही है एंड दैट इज AB. A और कहीं पे नहीं आ रहा, तो A is the mandatory part of the candidate key. Now D is present on the right hand side of C, so we are going to replace this D with C. So we'll find out AC closure. It is AC, C is determining D, E, F and B. So it is AC is also a candidate key. C is present on right hand side of AB. Already we have checked this. So this way you will keep on looking for more and more number of candidate keys. So here in this case 5 candidate keys are possible. All the attributes are prime attributes and there is no non-prime attribute. This is the correct answer. Clear? Simple? Next one. Determine the candidate keys, prime attributes, and non-prime attributes. AB and BC are CB are the candidate keys. Okay. AB closure is AB, C, D, E. Check for A closure. A, B closure is B only. So AB is one of the candidate key.
Durga Prasad, if AB and CB are the candidate keys, तो सिर्फ okay, yeah. So here prime attributes are AB. Now A is present on the right hand side of C, so we'll check for CB. CB, AB is determining C, C is determining D, and D is determining E. Check for C closer. C is determining itself, D is determining E, C is also determining A. B कहीं से determine नहीं हो रहा है तो B तो आएगा ही आएगा. So C is also a prime attribute. Non-prime attributes are D and E only. Very good. All of you are getting the right answer. Next. See. स्टार्टिंग में आपने देखा थोड़ा सा हम टाइम ज्यादा ले रहे थे बिकॉज वी वर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है. तो इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लॉजिक्स एंड स्पीड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट. Return the candidate keys, prime attributes and non-prime attributes. Okay. तो स्टार्ट कहां से करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम AB. ABC. So we'll start from AB closer. AB is determining AB, C is determining D is determining E. सारे attributes are, but I'm calling this as a super key as of now. Super key. Let's check for its subset A closer and B closer. A closer will be A is determining itself, A is determining B, AB is determining C, AB मिलकर C को determine कर रहे हैं, C is determining D and D is determining E. Okay. Now A, B, C, D, E, that means all the attributes are determined. So this means that this is a super key, not a candidate key. AB is a super key, not a candidate key. So here we get A. B closer is B. That's it. So A is one of the candidate key. So we have got a prime attribute as well. Now check if A is present on right hand side of any functional dependency, A is present on right hand side of C. So we'll be replacing this A with C. We'll find out C closer. A is determining all the attributes. C ने A को determine किया और A बाकी सारे attributes को determine कर रहे हैं. D and E. So C is also a candidate key. It's a prime attribute as well. Now check C is present on right hand side of any dependency. Yes, C is present on right hand side of AB. AB closer हम already check कर चुके हैं. So इसके अलावा और कोई possibility है? No other possibility is there. So we'll stop here. A and C are the two prime attributes. So non-prime attributes will be B, D and E. This is the answer. Clear? Are you all comfortable with in finding the super key, candidate key, prime attribute and non-prime attribute? तो जब भी आपके पास, मैंने क्या किया, जहां पे भी हमारे पास दो attributes को मिलाकर और we are getting a compound super key, there we are calling that as super key, not the candidate key at the first instance. जब तक हम ये श्योर नहीं हो जाते कि its subset is not determining all the attributes of a relation, तब तक हम उसे कैंडिडेट की नहीं बोल सकते. बट अगर आपके पास सिंपली एक ही एट्रीब्यूट क्लोजर है तो डायरेक्टली वी कैन कॉल दैट एज द कैंडिडेट की, क्योंकि एक से कम एट्रीब्यूट तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. नेक्स्ट वन, आई गेस दिस इज वेरी सिंपल, ज्यादा सिंपल हो गया ये. सो हियर वी आर गेटिंग AB as the candidate key. Prime attributes are A and B.
and non-prime attributes are C and D. This is very simple. Next one. We'll solve one or two more questions and then we'll end our discussion so that you get comfortable. बाकी एक और important application है, that is functional dependencies, equality between functional dependency set and decomposition and normalization. That will cover in the next marathon. Okay, or we can cover that on Monday. Instead of PYQs, we can cover the concept. So that next weekend we can start with the next concept. Return the candidate keys. This is a good question. Prime attributes. जो मैंने आपको point बताया है, you have skipped that point. That's why you are getting incorrect answer. Let's start with AB closer. AB is determining itself, AB is determining C, C is determining D, D is determining E. सारे attributes आ गए, but I'll not call this as the minimal super key. This is, for me, this is a super key. We'll find out A closer. A is determining itself. That's it. B closer is B only. So AB is, now we can say that it is a candidate key. AB. So I'm taking prime attribute A and B. Now B is present on the right hand side of D. E is present on the right hand side of E. तो पहले मैं A के साथ replace करवा रही हूँ. So this comes out to be EB. दूसरी possibility क्या आ रही है? B is present on the right hand side of D. So here we'll check AD closer. Correct? B को replace करवाया D से, so we'll check for ED closer. अब check करो EB, E is determining A, AB is determining C, C is determining D. B closer find कर चुके हैं. Let us find out E closer. E closer is A is E closer is E, E is determining A. That's it. So EB is another candidate key. E is a prime attribute. Check for AD closer. AD is D is determining B, C and D is determining E. अब check करो यहाँ पे I'll be looking for A closer and D closer. A closer हम find कर चुके हैं. Check for D closer. D closer is D. D is determining B. And also D is determining E. E is determining A. AB is determining C. D closer alone is able to determine all attributes of relation. So this is super key, not candidate key. So only D is a candidate key. Now D is present on right hand side of C. अगर आपके पास D closer is determining all attributes of relation, I am replacing it with C closer. So that will also determine all attributes of relation BEA. So C is another candidate key. C is present on right hand side of AB, so we'll stop here. एक आंसर आपका करेक्ट था. In this case, there is no non-prime attribute, but the set of prime attribute or set of candidate keys you had returned was incorrect. So please keep this point in mind whenever we are finding a key, and if that super key is a compound super key, so don't forget to check for its subset closer.
अगर मैं यहाँ पे सबसेट चेक नहीं करती तो डायरेक्टली आई कुड हैव रिटर्न दैट AD इज अ सुपर की, AD is a candidate key, whereas D is a candidate key, AD is a super key. So in this case, we are getting 4 candidate keys: AB, EB, D, and C. These are the candidate keys. One last question, and then we'll end our discussion. I guess we have already discussed this. No, थोड़ा सा change है इसमें. A, B, C, D are candidate keys. Praneeth, tell me A closer is it determining all attributes of relation? Very good, Durga Prasad. बच्चे A closer is A, B, C, D only. But in the relation R, we have 5 attributes A, B, C, D, E. Where is E present? E is not a part of any functional dependency. E किसी भी functional dependency का part नहीं है. That means E has to be included exclusively A, B, C, D, E. So AE is a candidate key. A is present on the right hand side of D, तो आप A को D से replace करवाओगे. आप कोई भी closer ले लो, A, B, C, D, किसी में भी E नहीं आएगा. E closer में सिर्फ E आएगा. That means यहाँ पे जितनी भी keys बनेंगी आपके पास, all the keys will be the composite keys. So AE, A will be replaced with D. D can be replaced with C. E तो आएगा ही आएगा. E will be a part of every candidate key. C is present on the right hand side of B. B is a present on right hand side of E. So A, so that is already covered. Prime attributes are A, B, C, D, E. Non-prime attributes are none. तो जब भी आप एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन. की मीन्स when attribute closure is determining all attributes of a relation. बार बार हम all पे फोकस कर रहे हैं. ओके, तो आई गेस आपको अपनी सिली मिस्टेक समझ में आ रही है. What will be the candidate keys here? I'll share the PDF. You can try this question because in this you'll be getting not many keys. So this is all about this session, and in the next session we'll talk about the concept of normalization. I'll share this PDF with you guys. So if you want to get this PDF, join the Telegram group, and through this group you'll be able to get all the PDFs of all the YouTube sessions. Tomorrow, is there any class? No, tomorrow is Sunday, so this Sunday we'll keep this as off. From next Sunday we'll Sunday को अभी के लिए हम लोग ऑफ रखते हैं, ठीक है. If there will be any update, I'll post that in the Telegram group. Discussion and doubt solving will be there. You can directly interact with me. Quizzes and polls will also be there. Let me show you from where you can join this group. So currently आप ये session देख रहे हो. Go to its description. मैंने फर्स्ट लिंक क्लिक किया है. दिस इज फॉर द मास्टर क्लास. मास्टर क्लासेस का लिंक है. आज कोई मास्टर क्लास नहीं है. मास्टर क्लासेस मंडे से फ्राइडे होती है. सेशन के एंड पे मैं दोबारा आपको बता देती हूँ दैट व्हाट इज माय स्केड्यूल.
And here if you check टेलीग्राम सुपर कोचिंग टेलीग्राम ग्रुप, तो जैसे ही आप इस ग्रुप पे लिंक क्लिक करोगे यू विल बी टेकन टू द टेलीग्राम एंड यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप. And if you want to join the super coaching batch, super coaching में guys benefit is you'll get the PDF of all the notes or from all the subjects, जितने भी concepts है सबके notes मिलेंगे आपको. Let us go to the link that is super coaching. So as of now, the here I have selected the course as GATE CSE. आपको यहाँ पे अपना course select करना है. That is NILET, NIC NILET. Okay, this is NIC NILET. तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, अभी currently sale is going on. तो it is showing that 6 month subscription is for 3429. But here आप नीचे देख सकते हो कोर्सेज, सुपर टीचर्स, डेमो क्लासेस, लाइव सीरीज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, ये सब कुछ आपको डेमो में मिल जाएगा. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द प्राइसिंग. हियर 3 plans are there: 1 year plan, 6 months and 3 months plan. I guess to be on safe side, 6 months plan is the better one. 6 months या 1 year plan के लिए जाओ, क्योंकि प्रॉपरली अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है ना, निलेट साइंटिस्ट बी का इतना सिलेबस है, it's not feasible to complete the whole syllabus in 3 months. So better idea is 3 months में आप तभी कवर कर पाओगे अगर आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, आपको क्विक रिवीजन करनी है, आपकी सिटिंग बहुत ज्यादा है, यू कैन डेडिकेट लाइक 8 to 10 hours. तो आप 3 months का प्लान लो, क्योंकि सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, बट आपकी सिटिंग चाहिए. तो मेरी सजेशन ये रहेगी, सेफ साइड पे रहने के लिए 6 months के लिए जाओ. अगर आपको स्क्रैच से प्रिपेयर करना है, गो फॉर 12 month सब्सक्रिप्शन. प्राइसेस आपने नोट डाउन कर लिए, 4129, 3429 एंड 2659. बट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई हियर अ कूपन दैट इज शेफाली एस, अप्लाई 3429 से एक आ गया 3184, दैट फॉर 6 months. So 500 समथिंग एवरेज आ रही है, सो आई गेस दैट इज नथिंग. बट ये आपको लाइफ लॉन्ग पे करेगा, क्योंकि जितने भी PSUs हो रहे हैं, जितने भी एग्जाम्स है, ऑलमोस्ट सबका जो मेजर सिलेबस है दैट इज सेम. सो इफ यू हैव वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर वन सब्जेक्ट, वन एग्जाम, बी इट गेट, NIC, तो आप बाकी सारे एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो. ओके, if you have any doubt or query you can write in the chat section. Okay. So currently pass textbook pass के लिए also the sale is going on. 499 में you'll be getting the lifetime subscription and 269 इस पे भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको फिर कूपन अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज फॉर टेक्स्ट पास. जैसे सुपर कोचिंग में मैंने आपको पास कोड अप्लाई करके दिखाया टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. सिमिलरली फॉर टेक्स्ट बुक पास, code is Shefali S pass, and for super coaching code is SHEFALIS. So this is the coupon code. So in the next session we will be discussing the previous year questions from multiple subjects, क्योंकि last session में आप लोगों की feedback थी, आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैम मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिक्स करके क्वेश्चंस ले लो. तो मंडे को हम मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे. Schedule is Monday to Friday. We have 2 sessions, one on YouTube, other one is textbook masterclass. Here this is time is 5 p.m. time is 9 p.m. सैटरडे एंड संडे सिर्फ और सिर्फ मैराथन होगी. इस बार सैटरडे को किया है तो संडे वी विल बी कीपिंग ऑफ मैराथन्स, जिनमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. स्टार्ट टाइम इज 5 p.m.
This is the start time and no end time. Okay. So this is all from my side. If you have any doubt or query, you can write in the chat section. I hope today's session was useful for you guys. Although काफी लोगों के responses आ रहे थे, this means that कि आपको topic की knowledge थी, but शायद फिर भी कहीं ना कहीं silly mistakes हो रही थी, तो उससे आपको और clarity आई, right? So tomorrow there will be no class. Now I'll see you on Monday evening at 5 p.m. on the YouTube session. I guess there is no query. बाकी अगर कोई भी query है, you can post that in the Telegram group or you can also write in the comment section. Comments में कई बार इतनी सारी videos हो जाती हैं, daily सबके comments read करना is not possible. So it will be great if you can post your query in the Telegram. Okay. So this is all about this session. Thank you so much, guys. Enjoy your Sunday. I'll see you on Monday. Take care. Bye bye. God bless you all.